Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss about the unit step sequence. So let's get started. So what is unit step sequence? Actually, the unit step sequence is a unit step signal in the discrete domain. That means ये जो unit step sequence है, ये unit step sequence का मतलब होगा कि आपका एक unit step signal in the discrete time domain, and it is denoted by u of n, where n is the discrete time. So what will be the definition of this unit step sequence? The definition, that is the mathematical definition, is that the un will have value or magnitude of 1 when n will be greater than or equals to 0, and it will have 0 value when n will be less than 0. So this is the basic definition of a unit step sequence un. So if it is the mathematical equation for this un, so what will be the graphical representation? So let's look at the graphical representation. So the graphical representation looks like this. So this is u of n, and this is the discrete time axis n. So let us see, this n is discrete, so it will have 0 value, it can have 1 value, it can have 2 value, 3 value, 4 value, and so on. And let us take 5. Similarly, it will have -1, it will have -2, it will have -3. और 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू n का नहीं होंगे, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3. Now, if we want to define this un graphically, then you can see that when n equals to 0 or greater than 0, it will have a sample with amplitude 1. So that means in this case we will get a sample here, the value will be 1. Similarly here also we will get a sample, the value will be 1. Similarly at 2 we will get a sample. Similarly at 3 we will get a sample. Similarly we will get at 4, 5 and so on. So this is the graphical representation of un, and this is called the unit step sequence. Now let us do some टाइम डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस सिग्नल. मतलब यूनिट स्टेप सीक्वेंस के ऊपर हम लोग अगर कुछ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? दैट मीन्स लेट अस फाइंड व्हाट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ u ऑफ n-1. ये तो मेरा un था, तो u ऑफ n-1 मतलब मेरा टाइम शिफ्टिंग हुआ है. सो टाइम शिफ्टिंग अगर होंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आपका जो रिप्रेजेंटेशन होंगे, दैट रिप्रेजेंटेशन लुक्स लाइक दिस. So this is n, this is u of n-1. तो n-1 है, टाइम शिफ्टिंग माइनस है. So that means this signal will be shifted in this direction. कितना शिफ्ट होगा? 1 यूनिट शिफ्ट होंगे. So if this is n, so this will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Similarly और भी होंगे, और यहाँ पे आएगा -1, -2 और सो ऑन. नाउ ये 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 पे मेरा एम्पलीट्यूड था 1, 1 पे एम्पलीट्यूड था 1, सारे पे 1. अब ये n-1 है, दैट मीन्स दिस सिग्नल विल बी शिफ्टेड इन द राइट हैंड डायरेक्शन बाय यूनिट 1. सो दैट मीन्स दिस सैंपल एट 0 विल बी कम हियर एट n equals to 1. सिमिलरली यहाँ पे मेरा एक सैंपल आएगा, सिमिलरली यहाँ पे एक सैंपल आएंगे, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, और इसका एम्पलीट्यूड होगा 1. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ u ऑफ n-1. सो वी हैव गिवन अ टाइम शिफ्टिंग ऑफ -1. नाउ लेट अस टेक अनदर ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज इफ वी वांट टू see what will be the graphical representation of u of n-n. u of -n मतलब time reversal. So for that purpose let us draw the graph. So this is मेरा n होगा, तो यहाँ पे
मेरा 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5. सिमिलरली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 होंगे. अब मेरा टाइम रिवर्सल हुआ है, तो UN ये वाला था. टाइम रिवर्सल का मतलब ये जो सिग्नल था, दिस सिग्नल विल बी द मिरर इमेज. मिरर इमेज हो जाएंगे ये वाले जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के रिस्पेक्ट पे मिरर इमेज होगा. सो दैट मीन्स द सिग्नल विल लाइक दिस, n इक्वल्स टू 0 पे ये होंगे, और n इक्वल्स टू 1 पे जो सैंपल था वो चले जाएंगे n इक्वल्स टू -1 पे. सो दैट मीन्स वी विल हैव अ सैंपल हियर, वी विल हैव अ सैंपल हियर. n इक्वल्स टू 3 का -3 पे आएंगे, n इक्वल्स टू 4 का -4 पे आएगा. सिमिलरली n इक्वल्स टू 5 का -5 पे आएंगे. सभी का मेरा एम्पलीट्यूड होगा 1. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ UN-1. सो इन दिस वे we can define this unit step sequence, and we have discussed some time domain transformation of this UN. So hopefully you have enjoyed this video, and thank you for watching the video.